समक्ष प्रस्तुत है। आज सप्तम दिवस है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस, कुरुओम जनकल्याण संस्थान और HaatNow के सम्मिलित प्रयास से एकादश रुद्र-मंथन की इस कड़ी में आज सप्तम दिवस के प्रथम बेला में मैं आलोक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़ी मधुर और बहुत हृदयंगम व्यवहारिक कथा शिव पुराण की हम सबके समक्ष आचार्य जी, पंडित जी यहाँ हम सबके समक्ष उपस्थित हैं, वो प्रवाह कर रहे हैं। चर्चा राम की भी हुई, चर्चा शिव कथा के माध्यम से निरंतर प्रवाहित हो रही है। राम की चर्चा में राम के रामत्व की बात थी, शिव की चर्चा में शिव के शिवत्व की बात थी। और अभी तक की जो कथा रही है उस कथा में जैसे पंडित जी ने शिव का महत्व, शिव तत्व का महत्व, उनके पूजन का विधान और उनके दैवीय स्वरूपों के विधान और अन्य गणों इत्यादि का उनका संबंध और उनकी सार्थकता, इन सब की चर्चा की है। शिव हुए, राम हुए, भारत के जो अन्य मनीषी महापुरुष हैं, उन सबका जीवन इस रूप में भी काफी प्रभावशाली रहा है, इस रूप में भी प्रतिष्ठित है कि वह सामान्य मानविकी या सामान्य समाज के दिग्दर्शक होते हैं, दर्शक होते। शिव कथा की पंडित जी ने कल उद्घोष किया था कि अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आज से शुरू होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में शिव इस रूप में प्रतिष्ठित हैं कि भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के आधार पर भारत को एक सूत्रता में बांधने की जो आवश्यकता है, सांस्कृतिक आधार पे या विशुद्ध धर्म के आधार पर, वह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से, 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ में की थी कि जिस प्रकार आदि शक्ति के पीठ हैं, 51 पीठ हैं, उन सब पीठों में कुछ पीठ भारत में है, कुछ हिंगलाज माता इत्यादि के पीठ आपके बलूचिस्तान में है, जो अब भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से जब हम देखते हैं तो बलूचिस्तान में रह रहा हिंदू व्यक्ति अपने आप को मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल धाम के माता जी के शक्तिपीठ से कनेक्ट करता है। ये भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो भारत को एकता में, एक सूत्रता में बांधता है। यही व्यवहार्य है भारत के अनंत प्रतीकों का, चाहे वो शिव के रूप में हो या राम का वन गमन हो जो उत्तर से दक्षिण तक गया, या शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हो। आज ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रारंभ होगी। अयोध्या धाम से आचार्य जी हम सबके समक्ष ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रारंभ करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आचार्य जी। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले चगरलम् यस्यो रसिव्यालराट
सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाभिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। 15 थे आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं 15 लिख दिया। ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करहूं प्रणाम। दिव्य श्रीमद शिव कथा कथा करहूं अभिराम। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय जगताधार जगत नियंता सर्वेश्वर जगदीश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से विगत 4 वर्षों से ये जो दिव्य एकादश रुद्र मंथन की अमृतमयी गाथा शिव पुराण के माध्यम से हम आप सबको कहने एवं सुनने का आनंद प्राप्त हो रहा है, सत्संग का आनंद प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से शिव कृपा प्राप्त हम सब हैं, क्योंकि बिना शिव की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के, बिना राम की कृपा के जीवन में सत्संग का आगमन नहीं हो सकता है। सत्संग अगर जीवन में जीव को प्राप्त हो तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि भगवत कृपा से ही जीव के जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तो भाई पावन पवित्र मास में, श्रावण मास में सुंदर शिव पुराण की अमृत गाथा कुछ कहने से कुछ सुनने से पहले आइए 2 बार भगवान शिव जो कि परम कल्याणकारी देवता हैं उनके पावन नामों का आश्रय लिया जाए। तदोपरांत भगवत कथा भगवत इच्छा संयोगवश इससे पूर्व कथा करने वाले हमारे अनुज श्री अभिषेक शास्त्री जी भी आज कथा में उपस्थित हैं, जिनके द्वारा एकादश रुद्र-मंथन की कथा पिछली बार हम आप सबको श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ था। आज उनका भी आगमन कथा में हुआ है। तो आइए 2 बार भगवान शिव के पावन नामों का आश्रय लिया जाए, तदुपरांत कथा में प्रवेश। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो,
मन मंदिर का पर्दा खोलो, ये अवसर खाली न जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। धन दौलत साथ न जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया दो दिन का मेला, पंछी उड़ जाना है अकेला। यह दुनिया दो दिन का मेला, पंछी उड़ जाना है अकेला। सब यहीं पड़ा रह जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो, गौरी तु सद्भूषणा। स्कंधः शंभुसुतः सदाननयुतः, तुंडी च लंबोदरः। सिंहक्रेलिममूषकं च वृषभस्, तेषां निजं वाहनम्। इत्थं शंभुगृहे विभिन्नमतिषु, त्रैत्यं सदा वर्तते। श्री वेदव्यास जी महाराज श्री शिव महापुराण में वर्णन करते हुए कहते, भगवान शिव का जो परिवार है अद्भुत है, बहुत सुंदर है। लेकिन भाई सुंदर होने के साथ साथ इनके परिवार में कितनी बड़ी विषमता है। अगर ध्यान दे करके देखा जाए तो भगवान शिव चिता भस्म धारण करने वाले, गले में सर्पों का हार धारण करने वाले, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान शिव हैं, परम कल्याणकारी। और वामांग में शोभा बढ़ा रही माँ भगवती पार्वती का जो वाहन है वो सिंह है। और इनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी और गणेश जी। माँ भगवती पार्वती शक्ति का वाहन सिंह है,
और भगवान शिव का वाहन वृषभ है। सिंह में और वृषभ में, बैल में इतनी बड़ी शत्रुता है। अगर दोनों एक दूसरे को परस्पर देख ले, मिल जाएं, तो निश्चित रूप से आपस में लड़ भिड़ करके सिंह वृषभ का शिकार कर लेगा, रुकेगा नहीं। इतनी विषमता है। देवी जी का वाहन माँ भगवती पार्वती का वाहन सिंह है और भगवान शिव का वाहन वृषभ है, बैल है। दोनों में परस्पर द्वंद्व है। लेकिन भगवान शिव और माँ भगवती के वाहक में इतनी विषमता होते हुए भी दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। कभी किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं। भगवान गणेश जी के वाहक हैं मूषक और कार्तिकेय जी के वाहक हैं मयूर। दोनों में कितनी बड़ी विषमता है। भगवान शिव के गले में जो हार बन करके शोभा बढ़ा रहे हैं सर्प देवता, अगर ये गणेश जी के वाहन को पा जाए तो तुरंत निगल जाएंगे। लेकिन परस्पर द्वंद्व होते हुए भी हमेशा शांत रहते हैं। अगर सर्प को मयूर देख ले, मिल जाए कहीं, तो भाई निश्चित रूप से मयूर सर्प का शिकार कर लेते। इतनी बड़ी विषमता होते हुए भी लिखा है कि इत्थम शंभु गृहे विभिन्न मतिषु। बड़ी भिन्नता होते हुए भी लेकिन भाई चैत्यम सदा वर्तते। हमेशा ये सब प्रेम के साथ बिल्कुल शांत चित्त हो करके अपने अपने स्वामी के साथ रहते हैं, निवास करते हैं। परस्पर एक दूसरे को देखते हुए भी परम शांत रहते हैं। कल के पावन चरित्र में हम आप लोगों ने सुंदर भगवान की अमृतमयी कथा, अवधूतेश्वरा अवतार की कथा भगवान शिव की श्रवण। भगवान शिव परम अवधूत है और भाई शिव का भेष विकराल है। शिव परम कल्याणकारी हैं, अमंगल वेशधारी होते हुए भी परम कल्याणकारी हैं। ऐसे अवधूतेश्वर भगवान की दिव्य आख्यान को कल हम आप लोगों ने श्रवण किया। आज की चर्चा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहाँ पर एकादश रुद्रों के अवतरण की कथा है, प्राकट्य की कथा है, तो इतने रुद्र हैं, अगणित रुद्र हैं, उनकी कभी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन प्रमुख एकादश रुद्रों की कथा शिव महापुराण के माध्यम से हम आप लोगों ने श्रवण किया। आज की कथा 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विषवेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भूषमेशं च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और भाई इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सोमनाथ भगवान के
दिव्य प्राकृत्य की चर्चा हम आप लोग श्रवण करते हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, ऋषिया सूत जी महाराज कहते हैं कि देवताओं के जो प्रजापति हैं दक्ष, उनकी 27 कन्याएं और उन 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ किया। और भाई चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। देखने में चंद्रमा परम सुंदर, परम शांत है, शीतल। और भाई भगवान शिव के मस्तक पर अभिषिक्त होकर के भगवान शिव की शोभा के साथ साथ शोभा को बढ़ा रहे हैं और चंद्र देवता की भी शोभा बढ़ रही है। ऐसे चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। लेकिन चंद्रमा जो है परम चंचल है, इनका मन कभी एकाग्र नहीं होता। यह परम चलायमान चंचल है। जैसे जल की धारा अविरल बहती रहती है, उसी प्रकार से चंद्रमा का मन जो होता है वो कभी स्थिर नहीं होता। जब दक्ष प्रजापति ने उन 27 कन्याओं का पाणिग्रहण विवाह चंद्रमा के साथ किया, तो वो जो कन्याएं थी दक्ष प्रजापति की, चंद्रमा इतने सुंदर थे कि उनके रूप माधुरी को देख करके वो कन्याएं परम आनंदित हुई, परम प्रसन्न। और भाई अपने पति चंद्रमा के साथ वो कन्याएं प्रसन्न चित्त हो करके रहने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद चंद्रमा का जो आकर्षण था, चंद्रमा का जो लगाव था, वो जो 27 पुत्रियों में से एक रोहिणी नाम की पुत्री थी, उन्हीं रोहिणी के प्रति चित्ताकर्षण हुआ चंद्रमा जी का, और अनन्य भाव से वो रोहिणी के प्रपन्न हो गए और रोहिणी को ही मानते हैं। और जितनी भी 26 कन्याएं हैं, अनादर निरादर अपकार किसी का नहीं करते, लेकिन चंद्रमा प्रेम भी किसी को नहीं करते, केवल रोहिणी से ही उनका लगाव था। इस विडंबना को देख करके, इस स्थिति को देख करके वो जो और 26 कन्याएं थी वो बड़ी परम दुखी रहने लगी। उन्होंने विचार किया कि भला बताओ, मेरे पिताजी ने ला करके सुंदर पाणिग्रहण किया और हम लोगों के जीवन में चंद्रमा जैसे पति प्राप्त हुए, लेकिन समय का चक्र देखिए, आज चंद्रमा ही हम लोगों की तरफ देखने को तैयार नहीं है, वो रोहिणी के ही प्रपन्न हो गए हैं। उसी प्रकार से जैसे मनु जी महाराज के 2 पुत्र थे, पहला प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जी तो भगवान के भजन में निष्ठ हो गए, आत्माराम हो गए, लेकिन उत्तानपाद जी राजा हुए। और राजा उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब होता है उत माने ऊपर और पाद माने पैर, जिसका पैर ऊपर की तरफ हो वही प्रमाणित उत्तानपाद। हम सब जब माता के उदर में रहते हैं तो यही स्थिति हमारी होती है, सर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होता है। इससे यह बात बिल्कुल प्रमाणित होती है कि हम जितने भी मनुष्य हैं सब मनु जी की संतानें हैं और सब उत्तानपाद हैं। माता के गर्भ में, उदर में जीव की, मनुष्य की यही स्थिति होती है कि उनका पैर ऊपर की तरफ, सर नीचे की तरफ।
महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र, एक दो पत्नियां हैं उनकी, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। भाई महाराज उत्तानपाद सुनीति से तो प्रेम करते नहीं। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति, जो संत कहते हैं, सनातन धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से चलना यही सुंदर नीति है। और जो उसके विमार्ग में चलते हैं, विमार्गग हैं, जो अपने मन से चलते हैं, उनको शास्त्रों में सुरुचि कहा गया है। तो उत्तानपाद जी सुनीति से तो प्रेम करते नहीं, परम सुंदरी हैं सुनीति महारानी, लेकिन सुनीति से प्रेम करते नहीं हैं और सुरुचि से अत्यंत प्रेम करते हैं। वही स्थिति सुनीति से ध्रुव है और सुरुचि से उत्तम है। ये दो पुत्र हुए, ये भागवत की कथा है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है, जैसे चंद्रमा केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से उत्तानपाद जी महाराज भी सुनीति और सुरुचि दो रानियों में से केवल सुरुचि को, सुरुचि का मतलब जो मन में आए वही करते रहो, यही सुरुचि है। और सुनीति का मतलब जो शास्त्रों में वर्णित है, संतों के महाजनों एन गता स पंथा, महाजनों के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर, शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का मतलब है यही सुंदर नीति है। और भाई आज सारी कन्याएं, 26 कन्याएं मिल करके अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाती, और जा करके सारी कन्याओं ने एक स्वर से अपने पिता दक्ष से अपनी सारी दुख को निवेदित किया कि आपने सुंदर वर ढूंढ करके, जो हर कलाओं से पूर्ण है, ऐसे पति के साथ सुंदर विवाह तो कर दिया, लेकिन वो हम लोगों की तरफ देखते तक नहीं, हम लोगों को मानते नहीं, और रोहिणी के प्रति उनका अलग प्रकार का लगाव है, और केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हम लोगों को प्रेम नहीं करते हैं। इस स्थिति को सुन करके दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, और दक्ष प्रजापति ने अपने मन में विचार किया, ये दुर्दशा चंद्रमा की है, लेकिन कोई बात नहीं है। अपनी पुत्रियों की बात को सुन करके दक्ष प्रजापति ने अपने मन में निर्णय लिया कि हम चंद्रमा के पास जा करके उनसे निवेदन करेंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि वो मेरे दामाद हैं, मैंने उनका पाद प्रक्षालन किया है, उनका पूजन किया है, तो उनको कुछ कट वचन तो हम कह नहीं सकते, परंतु जा करके उनसे निवेदन तो कर सकते हैं। इसलिए दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों से कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य ही आपके पति चंद्रमा से मिलूंगा जा करके, और आपके कष्टों की निवृत्ति के लिए उनसे वार्तालाप करूंगा। और भाई दूसरे दिन दक्ष प्रजापति जाते हैं चंद्रमा के पास। जब चंद्रमा के पास दक्ष प्रजापति पहुंचे तो भाई दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे चंद्र देवता, आप इतने उत्तम कुल में पैदा हुए, आपकी इतनी ख्याति है, और आप में इतना सद्गुण होते हुए भी आप 14 रत्नों में से एक रत्न भगवान शिव की शोभा बढ़ाते हैं। इतना सब कुछ होते हुए उत्तम कुल में जन्म लेकर के भी आप इतना निंदित कार्य कर रहे हैं। आपको तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबको समान रूप से प्रेम करना चाहिए, पर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खूब समझाया अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार दक्ष ने, लेकिन भाई चंद्रमा भी चंद्रमा है, चंद्रमा को बार बार जब समझाया दक्ष ने, लेकिन दक्ष की एक भी बात चंद्रमा के
पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि भगवान शिव की ऐसी माया चंद्रमा पर थी कि उस माया से मोहित हो करके चंद्रमा दक्ष की बात को सुनने और मानने को लिए तैयार नहीं। देखो, भगवान की इतनी बलवती माया है कि भगवान की माया से पार पाना बड़ा दुष्कर है। भाई, संस्कृत व्याकरण में अगर माया शब्द की व्याख्या को किया जाए, माया क्या है? माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं है कहीं, वही भगवान की माया है। जैसे ज्येष्ठ की दोपहरी में चिलचिलाती धूप में जब हम हाईवे रोड पर गाड़ी लेकर के चलते हैं तो सामने देखते हैं तो कुछ दूर पर दिखाई देता है कि जल ही जल भरा पड़ा। लेकिन जब हमारी गाड़ी वहां पहुंचती है तो जल की जगह हमें स्थल दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान की जो बलवती माया है वो दिखाई तो किसी को पड़ती नहीं है, लेकिन व्याप्त हर जगह पर है। जैसे वो जल हमको नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से भगवान की वो बलवती माया किसी को दिखाई पड़ती नहीं, लेकिन भगवान की बलवती माया हर जगह पर विद्यमान है, व्याप्त। तो उस भगवान की माया से अगर बचा जाए तो शास्त्र कहते हैं, पुराण एक स्वर से कहते हैं कि अगर माया से बचना है तो भगवान मायापति की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीव भगवान की दुस्तर माया से, बलवती माया से निश्चित रूप से बच सकता है। देवी ह्यसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ए प्रपद्यन्ते माया में काम तरंति ते। ये जो भगवान की माया है, यह संसार वालों को, हम समस्त प्राणियों को ये बंदर की तरह, बिल्कुल मरकट की तरह नचा रही है, बिना दिखाई पड़े अपना सारा कार्य कर रही है। तो इससे पार पाने के लिए, बचने के लिए जिसने मायापति की शरण को ग्रहण किया, वो गाय के खुर के समान इस भवसागर को पार कर सकता है और भगवान की दुस्तर बलवती माया से बच सकता है। इसलिए मायापति की शरण, भगवान शिव की शरण ग्रहण करने से माया का प्रभाव जीव के ऊपर नहीं पड़ता। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं, नट प्रेत विकट कपट खगराया, नट प्रेत विकट कपट खगराया, नट सेवकहीन व्यापी माया, नट सेवकहीन व्यापी माया। तो भाई, जैसे जादूगरी दिखाने वाला जो जादूगर होता है, उसके साथ रहने वाला जो उसका असिस्टेंट होता है, उस पर उस जादूगर की जादूगरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो साथ में रहता है असिस्टेंट, उस जादूगरी का उस पर प्रभाव नहीं, लेकिन जो जादू देखने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उस जादूगर का प्रभाव सारे लोगों पर पड़ता है। लेकिन जो साथ में उसके रहता है असिस्टेंट उसका, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से जो शिव की शरण को ग्रहण करता है, भगवान राम की शरण को ग्रहण करता है, उसके ऊपर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो यह माया सारे जग को नचा रही है। जैसे बंदर सुबह उठते ही नाचना प्रारंभ कर देते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी की इधर मीटिंग है, तो हर लोग सुख की कामना से
चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। को या को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। को या को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। सुख में दुख को हरसाय, हरि माया जादूगरनी। यह भगवान की दुस्तर माया से बचने के लिए शिव माया से मोहित होकर के दक्ष की एक भी बात को न मानने वाले चंद्रमा, दक्ष समझा करके जब पुनः वापस गए और देखा उनकी पुत्रियां आईं, और कुछ दिन बीतने के बाद पुत्रियों ने पुनः आकर के शिकायत किया कि आपके इतना निवेदन करने पर, विनम्र निवेदन करने पर भी चंद्रमा आपकी एक बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और तब लिखा है कि पुनः दक्ष जी आते हैं चंद्रमा के पास और बड़ी विनम्रता के साथ उनसे प्रश्न करते हैं कि हमने आपसे निवेदन किया कि आप इतने अच्छे कुल में पैदा हुए, इतना सब कुछ आपके पास, सुंदरता भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी आप ये ऐसा कार्य, निंदित कार्य कर रहे हैं जो कि आपको शोभा नहीं देता है। चलिए, अगर आप मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अब नहीं मानेंगे ऐसा मुझे विश्वास हो गया, इसलिए दक्ष प्रजापति ने थोड़ा सा क्रोध किया और क्रोध करके दक्ष प्रजापति ने भगवान चंद्रमा को श्राप दे दिया, जाओ तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। ऐसा वरदान जब भगवान दक्ष ने चंद्रमा को दिया, श्राप दिया, भाई जाओ तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ। अब जैसे ही चंद्रमा को यह श्राप मिला, चंद्रमा गिड़गिड़ाने लगे और दक्ष जी श्राप दे करके वहां से पुनः वापस हो गए। दक्ष के चले जाने पर चंद्रमा के श्राप का ज्ञान जब सप्त ऋषियों को हुआ, वशिष्ठ आदि संतों को हुआ, इंद्रादि देवताओं को हुआ, तो सारे लोगों में दुख की लहर घूम पड़ी। सारे लोग चिंतन करने लगे, अरे अरे, चंद्रमा तो पहले से ही दुष्ट था, लेकिन देखो आज दक्ष प्रजापति ने भी श्राप दे दिया, अब इसका कल्याण कैसे होगा। तो भाई चंद्रमा के पास सारे सप्त ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े संत गए और उन सबको प्रणाम करके चंद्रमा ने अपनी बात को निवेदन किया, हे गुरुवर, हे ऋषियों, मैं तो दक्ष के द्वारा श्रापित हो चुका हूँ, मुझको श्राप मिल चुका है। अब गिड़गिड़ाने लगे, वही जैसे परीक्षित जी महाराज को जब श्रृंगी मुनि ने श्राप दिया वज्रवाणी में, तो परीक्षित जी तो बिना विलंब किए हुए गंगा जी के तट पर पहुंच करके वहां पर सारे विद्वान ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा एकत्रित हुए और अपने मृत्यु को मंगलमय बनाने का साधन उपाय परीक्षित जी ने समस्त ऋषियों से मुनियों से पूछा था। इधर चंद्रमा वशिष्ठ आदि संतों से, सप्त ऋषियों से निवेदन करते हैं कि मेरा ये श्राप कैसे, इससे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा, इसके बारे में आप लोग कोई उपाय कीजिए। तो सारे ऋषि महात्मा वशिष्ठ आदि संत सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास जाते,
और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। जब वशिष्ठ आदि महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने देखा, तो वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ऋषियों, आप लोगों को आने का कारण क्या है? इंद्र, वशिष्ठ, सप्तऋषि, ब्रह्मर्षि, आप सब कैसे आना हुआ आप सबका? तो सारी बात को इंद्रादि देवताओं ने, वशिष्ठादि महात्माओं ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, इस समय दक्ष के द्वारा चंद्रमा श्रापित हो चुके हैं और वो क्षय रोग से पीड़ित हो चुके हैं। दक्ष ने श्राप दे दिया है। तो भाई ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चंद्रमा तो बहुत दुष्ट है, पहले से भी इतना दुष्टता करता आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रमा की दुष्टता का कोई पार नहीं है, चंद्रमा तो पूर्व से ही दुष्टता करता आ रहा है। फिर भी आप जैसे महात्मा इंद्रादि देवता अगर पीड़ित हैं तो कोई न कोई उपाय तो किया ही जाएगा। लेकिन चंद्रमा की दुष्टता की पूर्व कथा मैं आपसे निवेदित करता हूँ, 1 मिनट उसको भी आप लोग श्रवण कीजिए। तो भाई ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व में देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया चंद्रमा ने। और भाई वो दैत्यों के साथ जा करके संधि कर लिया और दैत्यों के साथ संधि करके दैत्यों की तरफ से देवताओं के साथ युद्ध भी किया। ऐसा दुष्ट है चंद्रमा। और जब हम ब्रह्मादि देवता अत्रि मुनि को साथ में लेकर के गए और निवेदन किया कि आप देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किए हो, आप उन्हें वापस कर दीजिए, तब जा करके बहुत निवेदन करने पर चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस किया। तो चंद्रमा आज का दुष्ट नहीं है, चंद्रमा तो पहले से ही दुष्टता करता आ रहा है। परंतु आप लोग आए हो तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के दुख की निवृत्ति के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को करने मात्र से चंद्रमा जो क्षय रोग से पीड़ित हैं दक्ष के श्राप से, वो उससे छुटकारा पा जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। अगर चंद्रमा अपना कल्याण चाहते हैं, इस क्षय रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो चंद्रमा से जा करके कह दो वो प्रभासक क्षेत्र में जा करके और वहां पर देवताओं के साथ जा करके, सप्तऋषियों के साथ जा करके और प्रभासक क्षेत्र में सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन करके बड़े भाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करें। अगर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, तो चंद्रमा इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं, इस दुख से, इस कष्ट से उनको निवृत्ति मिल सकती है। लेकिन विश्वास होना चाहिए मन में, क्योंकि चंद्रमा जो है बड़े चंचल, चलायमान। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि एकाग्र चित्त होकर के अपने मनो मस्तिष्क को एकाग्र करके और भगवान शिव की आराधना को करें। इससे निश्चित रूप से दक्ष के श्राप से चंद्रमा छुटकारा पा जाएंगे। ऐसा जब निवेदन किया ब्रह्मा जी ने, तो भाई अविलंब बिना विलंब किए हुए वो सप्तऋषि इंद्रादि देवता और वशिष्ठ आदि महात्मा वहां पर लौट करके आए जहां पर दक्ष प्रजापति और चंद्रमा बैठे हुए। उस स्थान पर पहुंच करके सारी बात को वशिष्ठ आदि महात्माओं ने, सप्तऋषियों ने चंद्रमा से निवेदन किया, भाई आप प्रभासक क्षेत्र में जाकर के
और पार्थिवेश्वर लिंग की स्थापना करके और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए बड़े विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें। शिव प्रसन्न हो जाए तो उनका कल्याण संभव है। और मन में विश्वास होना बहुत आवश्यक है, जरूरी। इसलिए भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं। माँ भगवती पार्वती श्रद्धा का स्वरूप हैं। इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरम। तो चंद्र देवता उन सप्तऋषियों की, वशिष्ठ आदि महात्माओं की, इंद्रादि देवताओं की बात को सुन करके उन सबको प्रणाम किया और उन सबको साथ लेकर के प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए समस्त प्रकार के साधनों को एकत्रित करके सुंदर मिट्टी के द्वारा पार्थिव शिवलिंग को अपने निज हाथों से चंद्रमा ने बनाया और बना करके और षोडशोपचार पूजन करके और फिर उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का अनवरत जप करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तपस्या में रत हो गए चंद्र देवता, तो जितने भी देवता थे, इंद्रादि देवता, वशिष्ठादि महात्मा, वो सब सप्तऋषि आदि वहां से वापस चले आते हैं। लिखा है कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 6 महीने तक, 6 मास पर्यंत चंद्रमा ने 10 कोटि सहस्त्राणी 6 महीने तक अनवरत चंद्र देवता ने भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और पार्थिवेश्वर लिंग की सुंदर उपासना किया, उनका पूजन किया। ऐसा करने से भगवान शिव परम प्रसन्न हुए। भगवान शिव तो क्षणे रुष्टा, क्षणे पुष्टा, रुष्टा पुष्टा, क्षणे क्षणे। भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। इन जब चंद्रमा ने सुंदर उपासना किया और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, तो भाई इससे भगवान शिव परम प्रसन्न हुए और भगवान शिव उन चंद्र देवता के सन्मुख प्रकट हुए। और प्रकट होकर के भगवान शिव ने चंद्र देवता से कहा कि अब आप वरदान मांगिए, मैं आपकी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। अब आपके मन में जो भी कामनाएं हों, जो भी आप इच्छाएं हो, वो वरदान मांग सकते हैं। तो चंद्र देवता ने कहा कि मुझको तो सिर्फ, आप परम कल्याणप्रद देवता हैं और आप सबके मनोभाव को जानते हैं। इस समय मैं क्षय रोग से पीड़ित हूँ, दक्ष के द्वारा श्रापित हूँ। आप कृपा करके मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, ऐसा वरदान आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने आज चंद्र देवता को वरदान की प्राप्ति करा दिया, वरदान दे दिया, और जिससे चंद्र देवता परम पुष्ट हुए और भाई बलशाली हुए और दक्ष के श्राप से जो संतप्त थे उससे उनको छुटकारा प्राप्त हुआ और चंद्र देवता परम प्रसन्न हुए। सुंदर दिव्य स्तुति भगवान शिव की करते हैं। भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणत होते हैं। आप देवाधिदेव महादेव, सबसे ज्यादा कल्याणप्रद हम जैसे देवताओं के लिए हैं। ऐसा दिव्य स्तवन किया। और भाई उसके बाद जितने भी ऋषि थे, सप्त ऋषि, वशिष्ठ आदि महात्मा, इंद्र आदि देवता पुनः वापस लौट करके प्रभासक क्षेत्र में आते।
जब भगवान शिव चंद्र देवता को वरदान दे रहे थे, उसी समय सारे देवता ऋषि मुनि सब वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और सब मिल करके भगवान शिव की दिव्य आराधना करते हैं, दिव्य उपासना करते हैं, दिव्य स्तुति करते हैं। और भाई भगवान शिव से एक स्वर में सारे सप्त ऋषि, देव ऋषि, वशिष्ठ आदि महात्मा, इंद्रादि देवता यही निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप इसी प्रभासक क्षेत्र में, अब आप यहाँ से जाइए नहीं, अब आप यहीं पर विद्यमान हो जाइए, आप यहीं पर रहिए, आप यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाइए। हम जैसे देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का और समस्त प्राणियों का आप यहीं पर रह करके कल्याण कीजिए। ऐसा जब सभी देवताओं ने निवेदन किया तो वहीं पर भगवान शिव की दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते भगवान शिव वहीं पर सोमनाथ के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और सुंदर शिवलिंग के आकार में भगवान शिव वहीं पर सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान सोमनाथ चंद्रमा की शोभा को बढ़ाने वाले, चंद्रमा की ख्याति को बढ़ाने वाले, इसलिए वो सोमेश्वर भगवान कहलाए। और भाई भगवान तो सदा अपने भक्तों के, अपने शरणागतों की मान को बढ़ाने वाले हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। और वही आज चंद्र देवता की ख्याति को बढ़ाने के लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के सोमेश्वर के नाम से भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसका दर्शन करने से चाहे कुष्ठ रोग हो, क्षय रोग हो या कैसा भी रोग हो, शिव पुराण के माध्यम से ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर सोमेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया जाए, उनका जलाभिषेक किया जाए, अगर श्रावण महीने में उनका दर्शन एवं अभिषेक करने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त हो, तो ऐसा वर्णन आया है कि भाई हर प्रकार के रोग की शांति के लिए भगवान सोमेश्वर नाथ का अभिषेक करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इससे रोगग्रस्त जीव समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और भाई हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पा जाता है और अंत में भगवान शिव के सानिध्य को, भगवान शिव के कैलाश पर स्थान प्राप्त करता है। ऐसा महत्व है सोमेश्वर शिवलिंग का। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसलिए अब जो दूसरा शिवलिंग है मल्लिकार्जुन, अब 5 दिन शेष थे आज को लेकर के, 4 दिन शेष हैं। इन्हीं 4 दिनों के शेष समय में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा शिव पुराण के माध्यम से हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। या राम जय राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम बोलो जय सिया राम। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका आचार्य जी। और
कथा, जैसा कि पहले ही आपने घोष किया था और तो कार्यक्रम प्रारंभ होने पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि 12 ज्योतिर्लिंगों की आज कथा है। अभी आपने एक श्लोक वर्णित किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो जो भक्ति है, जो हमारे आराध्य के प्रति हमारे समर्पण की उच्च स्थिति है, उसके लिए आवश्यक तत्व हैं श्रद्धा और विश्वास। और श्रीमद् भगवत गीता की जब बात हम लोग करते हैं तो वहां पे योगेश्वर कृष्ण का उद्घोष है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो ज्ञान हुआ, कर्म हुआ या भक्ति हुई, जो मानव जीवन की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं का जो प्रकटीकरण है, 3 अलग अलग बड़े योग हैं जिसको गीता में कहा गया। इन सब के लिए श्रद्धा, विश्वास, उसमें आस्था आवश्यक है। क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास, आस्था इत्यादि रहता है, ये सारे उद्गार हमारे भीतर रहेंगे किसी कार्य के प्रति, तो हमारी भी इंटेंसिटी बढ़ती है, हमारा इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ता है और निश्चित रूप से कार्य की सफलता अधिक प्रभावी रूप में हमारे सामने परिलक्षित होती है। सुंदर कथा चल रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले ज्योतिर्लिंग की कथा आज पूर्ण हुई, आगे की कथा आप कहेंगे। संक्षिप्त चर्चा, अगर आप में से जो सुधीजन है, आप में को संक्षिप्त चर्चा कोई बात अपनी रखनी हो तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, कुछ और कार्यक्रम हैं आगे, तो बहुत संक्षेप में अगर किसी को कोई बात अपनी रखनी है। तो डॉक्टर आलोक, मेरे को एक जैसे, लेकिन मेरे कैमरा शायद मेरा आवाज आप तक आ रहा है? बहुत जी आ रही धीमी है है आवाज। मैडम, बहुत धीमी है। मेरे कनेक्शन थोड़े पुअर है। आ रहे? तो मुझे बस पंडित जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको सुनते हैं और मन में काफी सारे विचार चलता रहता है। मुझे सिर्फ ये इतना चाहिए कि जब भी हम कोई इंडियन ट्रेडिशन में नंबर का काफी अहमियत होता है, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 108 हुआ, 9 हुआ, ये सब नंबर तो है, बट ये 12 ज्योतिर्लिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये 12 नंबर भी कोई इसका कोई संकेत या कोई विशेषता है, या से 12 ज्योतिर्लिंग वाला जो है, हम इसको 9 भी कर सकते थे या इसको और भी बढ़ा सकते थे, बट इसके पीछे कुछ है क्या? अब इसके पीछे की जो कथाएं हैं वो कथा के माध्यम से आप सुन ही रहे हैं। मैं जब जब भक्तों पर या देवताओं पर उनको श्राप हुआ या किसी प्रकार की परिस्थिति बस उनको भय उत्पन्न हुआ, तो जा करके जहाँ पर तपस्या किए वहां पर भगवान शिव की प्रसन्नता हुई और भगवान शिव आकर के वरदान दिए। तो वहां पर देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उन सबसे निवेदन किया कि आप यहाँ पर स्थान, आप यहीं पर रहिए, और इसी के माध्यम से जब आप यहाँ रहेंगे तो हम सारे देवता, ऋषि, मुनि, समस्त मनुष्य सब का कल्याण होगा। तो वहीं पर भगवान शिव ने अपना नियत स्थान बनाया। और इसके अलावा तो हम, जहाँ तक हमको जानकारी है, और ऐसा कोई कुछ भी नहीं है 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा में। हो सकता है हो कहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी तरफ से जानकारी है। जी जी जी। तो और आलोक कोई सर इस पर चर्चा? कुछ प्रकार डाल। अरे हम लोग एक जस्ट संख्या है, जैसे भगवान के 10 अवतार की बात है तो उसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की बात है, 51 शक्तिपीठों की बात है। तो जी जो जी आपने कहा वो अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि जैसे माँ भगवती के अंग जितने जगह पे धरती को स्पर्श किए वहां पे एक शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसी प्रकार भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने भक्तों के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि 12 जगहों पर वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए। तो ये
ईश्वर का ही अपना विधान है, किसी अन्य संख्या से या किसी अन्य व्यवस्था से जोड़ना शायद होगा, जैसे आपने कहा कि संभव हो सकता है कि विद्वान जन इसके विषय में कुछ अपने उनकी व्याख्याएं हों, कहीं से जोड़ रहे हो, लेकिन एक सामान्य क्रिया भी हो सकती है, जैसे एक सामान्य घटना है उस रूप में भी हो सकती है। अब क्योंकि समय की अपनी मर्यादा भी है, तो अब हम लोग एकादश रुद्र मंथन के द्वितीय सेगमेंट में जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कुरुम जनकल्याण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस यूएस और HaatNow के सम्मिलित प्रयास से यह कथा एकादश रुद्र मंथन का पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहाँ पे हम लोग शिव कथा करते हैं, शिव चर्चा होती है। उसके पश्चात शिव तत्व दार्शनिक रूप में कैसे व्याख्यायित किया जाए और शिव तत्व के दार्शनिक स्वरूप को विद्वान लोग व्यवहारिक धरातल पर कैसे देखते हैं, उनका सांकेतिक अर्थ क्या है, इसके लिए अलग अलग विद्वान वेदों में, अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित शिव तत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उस पर चर्चा होती है, विद्वानों की चर्चा, दार्शनिक चर्चा होती है। और उसके लिए मैं डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि आगे किसी विद्वान को आमंत्रित करेंगे तो लोग। जी धन्यवाद डॉक्टर आलोक, सभी को नमस्ते। और कथा बहुत ही अब मैं देख रही हूँ कि काफी अच्छी उसमें आ गई, क्योंकि हर कोई हम सभी जानना चाहते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों के विषय में हमें पता चले। और तकरीबन हम लोग अपनी पूजा में भी ये सब द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम बार बार लेते भी हैं। हम सब चाहते हैं कि शिव की कृपा हम पर बनी रहे, और ऐसी ही कई बातों को हम समेटे हुए आगे जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, जिसमें कि हम आमंत्रित वक्ता के द्वारा कुछ चर्चा करते हैं और कुछ शिव तत्व को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इस समय वक्त हो गया है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और जैसा कि वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर नाउ विद द concept of Ekādash Rudra-Manthan, that is a transformative cultural initiative for exploring our rural roots. And it is our sincere and elaborate effort to connect various aspects of human life intellectually, experientially, and practically. A critical element of this mission is the introduction of a dynamic dimension by incorporating life from rural segments to urban metropolis. It is an important component of our strategy to link intellectual resources of the educated class of the society to the most practical reality of the countryside living and learning at the global level. So with this, I'm reading just a few part of the concept note. It is very well, you all are very well aware of this concept note till now. And now it's time to invite the guest of today's talk. Today, we are very happy that among us we have Miss Rachana M. Narayanankutty ji, and she is an actor, dancer by life, followed the footsteps of the patron god of yoga and arts. Guided by her Acharya Srimati Geeta Padma Kumar ji, her impetus to specialize in traditional style of Kuchipudi promoted her to take master degree in Kuchipudi from Alliance University under the tutelage of Professor Vasantha Kiranji. She has done exclusive performances in various prestigious dance festivals. She is an acknowledged choreographer by herself. The Tamil movie Nitya Sumangali made her win the title of Best Choreographer internationally in Lonavala International Film Festival 2019. She is a well-known research scholar and has contributed a variety of research projects to the world of arts. She is a Sangeet Natak Academy scholarship holder and recently received the prestigious Mukundaraj Yuva Pratibha Puruskaram of 2022. She also holds a diploma in Bharatnatyam, diploma in Carnatic vocal, diploma in Mohiniyattam. She upholds the rich traditions of this classical dance forms. And we are very happy that we had a very elaborated bio from Ms. Narayanankutty ji, but I have to summarize according to in a very short way. But actually, she has done a lot more, which which I cannot even incorporate it here. So today we welcome her, and she will be speaking on Shiva Bhakti through dance with reference to Nataraja Thatwam. We welcome you, Ms. Rachana ji.
Namaskaram and thank you so much. So I wish I could share the screen. Is that fine? Yeah. Now you can share. Yeah. Namaskaram everyone. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Respected gurus, dignitaries, esteemed scholars, and dear friends, it's with great reverence and gratitude that I'm here before all of you today. I would like to begin by expressing my heartfelt thanks to Dr. Aparna Dirji for the gracious invitation to speak at this esteemed event, the Ekādash Rudra-Manthan, conducted by the Indian Institute of Advanced Sciences, USA, in collaboration with Kuruom Jankalyan Sansthan and Kuruom Vidyalaya, UP. This which provides a profound platform to delve into the rich culture of our spiritual heritage. For me, this gathering is a confluence of minds and spirits dedicated to exploring the depths of Rudra worship and its manifold dimensions. It's an honor to present my paper in such an august assembly where the pursuit of knowledge and devotion go hand in hand. I actually look forward to sharing my insights and learning from the collective wisdom present here today. So let's embark on this journey together with an open heart and a question spirit. My screen is stuck, actually. I'm not able to. You can reshare the screen then. Yes, now I think, yes. Satvikam Shivam Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने
कृतज्ञज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः. And that was the slokam. Ankikam bhuvanam yasya vachikam sarva vangmayam aharyam chandra tarati tam nama satvikam shivam. Tvam nama Now I'll satvikam. play the Sangeetanjali by Srimati Lalita Jyotsna. All have heard this sloka. The sloka Ankikam Bhunam Yasya is a profound expression that captures the essence of Shiva as the cosmic dancer Nataraja. So the sloka is a tribute to Shiva's dance, symbolizing the cosmic cycles of creation and destruction, as well as the daily rhythm of birth and death. So regarding the origin and the meaning of the sloka, Ankikam Bhuvanam Yasya, the one whose limbs are the universe. Vachikam Sarva Vangmayam, whose speech is the essence of all languages. Aharyam Chandra Tarati, whose ornaments are the moon and the stars. Tvam Vande Satvikam Shivam. Tvam Nama Satvikam Shivam. I bow to that pure Shiva. So coming to a detailed interpretation of this, Ankikam refers to the physical form or limbs. Bhuvanam means the universe or the world. So this line signifies that Shiva's body encompasses the entire cosmos. Vachikam pertains to speech or words. Sarva Vangmayam means all languages or the essence of all sounds. Shiva's utterances are the foundation of all forms of communication and expression. Aharyam Chandra Tarati. Aharyam refers to the attire or ornaments. Chandra Taradi denotes the moon and the stars. Shiva's adornments are not earthly but celestial. Tvam Nama Satvikam Shiva. Tvam Nama means I bow to him. Satvikam signifies the purity, virtue, and harmony. Shivam refers to Shiva, the auspicious one. So this concluding line is a reverent salutation to Shiva, acknowledging his pure, auspicious, and eternal nature. We also have a philosophical meaning behind the sloka. The sloka actually embodies the philosophy of Nataraja, the cosmic dancer of Shiva. And in this form, Shiva's dance represents the dynamic and cyclical nature of the universe. It's a dance of creation, preservation, and destruction, encapsulating the continuous process of the cosmos. So regarding the creation or the Srishti, Shiva's dance initiates creation, symbolizing the birth and manifestation of the universe from the void. Regarding the preservation or Sthiti, the dance maintains balance and order in the cosmos, symbolizing the sustenance of life and the universe. And regarding the destruction or Samhara, the dance also leads to destruction, signifying the dissolution of the universe, making way for new creation. So this cycle actually reflects the concept of anitya or the impermanence, and samsara, the cycle of birth and rebirth in Hindu philosophy. The sloka thus venerates Shiva as the cosmic dancer whose movements and expressions orchestrate the rhythm of the universe. I wish I could go to the next slide, but I think your slides are not, moving. yeah, that's what I'm stuck. I don't know what happened. Yes, I can play it like this. Yes, yes. Is it visible now? Yes, introduction slide Yes. is there. Yes, fine. So Shiva Bhakti. What is Shiva Bhakti? As we all know, we don't have to tell in a very detailed manner, but still,
Shiva Bhakti is the devotional worship and reverence of Lord Shiva, one of the principal deities in Hinduism. And Shiva is worshipped as the supreme god who embodies both the aspects of creation and destruction. So devotees of Shiva, known as Shaivites, express their devotion through rituals, prayers, chants, meditations, and various forms of worship. Coming to the origin of Shiva Bhakti, we have pre-Vedic and Vedic periods. We have post-Vedic development. We have Mahabharata and Ramayana, the epics. And we have the classical and medieval periods like Puranas, Shaiva Siddhanta, Bhakti movement, Kashmiri Shaivism. And coming to the modern terms, we have all the celebrations that we do to propagate Shaivism in Bharatam and globally. And Shiva Bhakti, with its deep historical roots and rich culture of devotional and philosophical practices, always remains a vibrant and integral part of Hindu spirituality. Coming to the importance of dance in Shiva worship. Dance holds a very central place in the worship of Lord Shiva, who is revered as Nataraja, the Lord of dance. This cosmic dance symbolizes the rhythm and cycles of the universe, encompassing creation, preservation, and destruction. The portrayal of Shiva as Nataraja is one of the most iconic and profound representations in Hinduism. So, Shiva as Nataraja, among the greatest of the names of Shiva is Nataraja, who is known as Lord of Dancers or King of Actors. The cosmos is his theater. There are many different steps in his repertory, and he himself is actor and the audience. The image of Nataraja depicts Shiva performing the Ananda Tandava, dance of bliss, within a circular frame of flames. This dance symbolizes the cosmic cycles and the continuous process of creation, preservation, and destruction. Coming to the symbolism of cosmic rhythms, Shiva's dance represents the underlying rhythm of the cosmos for sure. The cyclical nature of the universe with its creation and destruction is mirrored in the dance, reminding devotees the importance of the impermanence and interconnectedness of all life. And regarding the spiritual expression, dance is a medium for devotees to express their devotion and connect with the divine. Through classical dance forms like Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kuchipudi, Kathakali, Odissi, Kathak, Manipuri, Satriya, dancers embody the stories, emotions, and energies associated with Shiva. In temples and religious festivals, dance is an integral part of rituals. During festivals like Mahashivaratri, devotional dances are performed to honor Shiva, celebrating his cosmic dance and invoke his blessings. The physical act of dancing, synchronized with the rhythm of breath and the beat of music, also serves as a meditative practice. It definitely helps in achieving a state of transcendence and unity with the divine. And coming to the cultural heritage, dance is slides are still not moving. Yeah, this is the slide. Okay, the fourth one. Yes, okay. Fourth one. Okay, yes. fine. Coming to the cultural heritage, dance as worship preserves and transmits cultural and spiritual traditions. And finally, dance as the embodiment of divine energy. Dancers often invoke Shiva's presence, believing that through their performance, they channel his divine energy. This embodiment of divine energy is seen as a sacred act, merging the physical and spiritual realms. As we spoke, Shiva is
considered as Nataraja. The dancer form of Shiva is known as Nataraja, and there is a Tattvam behind Nataraja. It's commonly known as Nataraja Thatwam. So Nataraja Thatwam refers to the philosophical and symbolic essence encapsulated in the depiction of Lord Shiva as Nataraja, the cosmic dancer. This concept actually embodies the profound understanding of cosmos, life, and the divine through the medium of dance. Shiva's dance as Nataraja represents the dynamic and cyclical nature of the universe, encompassing creation, preservation, and destruction. Actually, there are various dances of Shiva, out of which 3 are very important. The first one is an evening dance in the Himalayas with a divine chorus that he does, and it is described in the Shiva Pratosha Stotra as well. This evening dance is also referred to in the invocation preceding the Katha Sarit Sagara. When we see the pictures of this particular dance, Shiva is two-handed, and the cooperation of the gods is clearly indicated in their position of chorus. There is no prostrate Asura trampled under Shiva's feet. So, no special interpretations of this dance occur in Shaiva literature. The second is the very well-known dance of Shiva, which is called as Tandava. And it belongs to the tamasic aspect of Bhairava or Veerabhadra. It's performed in cemeteries and burning grounds, where Shiva, usually is 10-armed form, dances wildly with Devi, accompanied by troops of capering imps. Representations of this dance are common amongst ancient sculptures, as at Ellora, Elephanta, and Bhuvaneshwara. This dance is in origin that of a type which we have in pre-Aryan divinity, like half god, half demon, who holds his midnight revels in the burning ground. Now, thirdly, we have Nadanta, dance of Nataraja, before the assembly or the Sabha, in the golden hall of Chidambaram or Tillai, the center of the universe. First revealed to gods and then to rishis, after the submission of the latter in the forest of Taragam, as related in the Koil Puranam. So there is a elaborated story behind this. I'm not going much detailed into the story. Coming back to the idol of Nataraja, the depiction of Nataraja, the image of Nataraja is one of the most iconic and spiritually significant representations. You can see the circle of flames, that is Prabha Mandala. You can see Shiva's dancing posture in Ananda Tandava, the dance of bliss. You can see the drum or the damaru, which represents Nada. You can see the flame, that is Agni. You can see the Abhaya Mudra. You can see the Gajahasta Mudra. And you can see the raised foot as well, along with the demon Apasmara or Muyallaka and a serpent as well. So there is a philosophical essence of Nataraja Thatwam. Considering the cosmic cycles, Shiva's dance epitomizes the perpetual cycles of the universe. The cosmic dance, as we discussed earlier, it involves the process of creation, preservation, destruction, concealment, and grace as well, which is considered as Srishti, Sthiti, Samhara, Tirobhava, and Anugraha. Shiva actually represents, or Nataraja actually symbolizes, the harmonious integration of opposites, creation and destruction, movement and stillness, form and formlessness. This duality represents the balance and unity inherent in the cosmos. Now coming to the symbol of enlightenment, the dance of Shiva represents the journey towards enlightenment. By subduing ignorance and ego,
which is represented by Muyalaka or Apasmara. Shiva guides souls towards spiritual awakening and liberation. The Ananda Tandava of Shiva is an expression of cosmic joy and bliss. It actually signifies the joy of creation and the ecstasy of divine play, or the Leela. This aspect of Shiva emphasizes the joyous and celebratory nature of existence. Understanding Shiva Bhakti. What is Shiva Bhakti and what is the significance of Shiva Bhakti? Shiva Bhakti, as we discussed, is the devotional worship and deep reverence for Lord Shiva. Shiva is worshipped as the supreme god. Devotees of Shiva, known as Shaivites, they engage in various practices to express their devotion and seek his blessings. So what is the significance of Shiva Bhakti? First, we can take it as spiritual liberation, protection and blessings, purification, universal connection, where Shiva is seen as the embodiment of cosmos. Devotion to Shiva fosters a sense of connectedness with the universe and the divine. I'm sorry. What happened, Rachana ji? I'm stuck somewhere again. Let me try. Can you all see? Yes, dance is a medium of devotion. Yes. Okay. So the role of dance in Shiva worship, its historical context and development, the symbolism of dance. We have a lot of Indian classical dance forms and Indian folk dance forms, where whenever a student, whenever an artist starts his or her first performance, there is no day or no moment that they forget Shiva. And in most of the classical art forms, we start a performance with a Shiva Stuti. Also a Ganesha Stuti. So coming to the historical context and development regarding the dance, we have Indian classical and folk dances intricately weave the praise of Shiva and Nataraja into their performances, creating a seamless blend of art and spirituality. So it is between the performer and the performance who becomes one with the Shiva. This unity reflects the essence of Shiva Bhakti, where the dance becomes a powerful medium to experience and celebrate the cosmic rhythm and divine presence of Lord Shiva. So we have Nataraja's iconography, symbolic meanings, and philosophical interpretations here. You can see on the screen the iconography of Nataraja, where the Jadadhara, the matted hair, the one with the matted hair, which symbolizes destroys heavenly bodies. Now we can see Ganga here, which represents source of life. And we have Damaru. The two sides of Damaru represents Akasha and Shabda. We have Trayambaka, the third eye, the three eyes, sun, moon, and the fire. We have the Abhaya Mudra as protection. We have the Agni, the Pralaya Agni, which destroys the world. Gajahasta Mudra, and we have Ardha Chandra Mudra, which is like a bend. Gajahasta Mudra shows
denotes to the Bhujangatrasa mudra, which is on his leg, which represents the freedom from fear and liberation. The leg is lifted here as if the snake is seen. Now we have Trasu, the snake, which represents the poison, where it is on the Apasmara Purusha, that is the illusion and ignorance. So through illusion and ignorance, the victory over wickedness, we are tangled in the illusion and ignorance, and the victory over the wickedness is represented here. The Prabhavali, the one you can see around the Nataraja, the arch of flames, represents the motion of earth. It represents the endless cycle of births and deaths. So through this iconography of Nataraja, many dancers have choreographed beautiful compositions representing Nataraja, acting as Nataraja, telling stories of Nataraja, telling different stories of Shiva as well. So there are a few significant choreographies in Indian classical dance forms, where it suggests the unity of the dance and the dancer with Shiva as the cosmic rhythm and divine presence of Lord Shiva. Here I would like to show you a choreography of mine, which I have done at the time of COVID. Let's watch it and then come back to the rest of the portion. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Sukhi Parinishobidam Vipala Pakshasumbhavavayamatam Chandrasekhara Telintananam Ambike Mama Sada Shivam Ambike Mama Sada Shivam Ambike Mama Sada Shivam.
Shiva Shambho, Swayambho, Shiva Shambho, Swayambho. So that was something which I did in the format of a Kuchipudi dance form. I'm a Kuchipudi dancer. So I can talk more about the choreographies in Kuchipudi that has been done by scholars, eminent personalities who has done different choreographies on Shiva in Kuchipudi and its significance. So we have Natesha Kautam, Haravilasam, Shiva Tarangam, Ardhanalishwaram, different Varnams, Padams, Javalis, Kritis, Kirtanas, and Nandanar Charitam. It goes, it's a vast repertoire actually. But basically what I have found it from my personal experience, whatever dance form you do, whatever composition that you choose to dance, especially on Shiva, the significance of the choreographies on Shiva in Kuchipudi are tremendous, actually. Though Kuchipudi is something that has originated to propagate Vaishnavism, when it comes to Shiva, as the connection is always there with the cosmic dancer for each and every dancer, this happens so beautifully as your choreography centered on Lord Shiva holds always a special place. So these performances not only celebrate Shiva's cosmic dance, but it also embody the spiritual and philosophical aspects which you hold inside you. So this particular choreographies has the spiritual expression, philosophical exploration, cultural preservation, aesthetic excellence, educational value too. So it's a combination of everything. You would be definitely elevated to the next level of your life, not as a dancer, but as a human, after doing a choreography or a performance on Lord Shiva. And I must pay my obeisance and gratitude to the great choreographer, Dr. Vempati Chinna Satyam Garu, who's a very, very, very famous choreographer in Kuchipudi, who has done lots of choreographies on Shiva. I wish I could show a few videos, but we don't have much time. Vempati Master has done Haravilasam, which is Shiva Leela Vilasam. He's the one who has choreographed Ardhanarishwara. He has done on Shiva Parvati Kalyanam, and he has done Dakshayatnam and Shiva Tandavam exclusively. So all these videos are available on the YouTube as well. So I would like to say the choreographies on Shiva and Kuchipudi, especially those by Vempati Chinna Satya Master, holds immense significance in the realms of spirituality, philosophy, culture, and aesthetics. So through these performances, the timeless stories and profound teachings associated with Shiva are brought to life, allowing the audiences to experience the divine. That is very important. Being a dancer, being an artist, if you can't bring your audience to experience the divinity through your enchanting medium of dance, you are in vain. But considering Vempati Chinna Satyam's contribution, it has not only enriched Kuchipudi, but have also ensured the perpetuation and reverence of Shiva's legacy in Indian classical dance. So these are the few choreographies that he has done, and all these are part of our repertoire. Now coming back to Nataraja Thatwam, the cosmic dance, the picture that you are seeing here is taken by John Webb recently. Actually, I think 2 weeks back. It was called as the penguin and the egg. And
Many media, they have titled this as the cosmic dance has happened among the galaxies. So this is Nataraja Thatwam, basically. We have named this cosmic dance as Nataraja. So this is a prototype of cosmic dance, the Nataraja Thatwam or the Advaita Tattvam. So considering and talking about this cosmic dance of creation and destruction, we have this beautiful harmony and balance of this universe. We have this cosmic equilibrium, which is suggested by the Nataraja's posture, the balanced posture of Nataraja with one foot on the ground and the other raised. It represents the perfect balance between opposing force and the rhythmic movements. So dance as cosmic rhythm, Nataraja's dance symbolizes the rhythmic cyclical nature of cosmos. And coming to the cosmic rhythms, the universe actually exhibits rhythmic patterns such as planetary orbits, seasonal cycles, and biological rhythms. So these patterns reflect the underlying order and harmony in the cosmos, akin to the dance of Shiva. And regarding the Advaita Tattvam and thermodynamics, the non-duality and energy conservation, talking about the non-duality and energy conservation. Advaita philosophy, we all know, Advaita Vedanta posits that the true nature of reality is non-dual, where the individual, the self, the Atman, and the universal self, the Brahman, are one. So talking about the conservation of energy, in thermodynamics, the law of conservation of energy states that energy cannot be created and destroyed, but only transformed. So this principle reflects the non-dual nature of reality, where the total energy, that is Brahman, remains constant, though it manifests in different forms, that is Atman. And we spoke about the unity of opposites earlier, like Advaita and opposites. Advaita Vedanta teaches that apparent duality, such as creation and destruction, are illusory, and that the underlying reality is just one. So coming to the thermodynamic equilibrium again, in thermodynamics, systems tend towards equilibrium, where opposing process like heating and cooling, they balance out basically. So this reflects the Advaitic idea of the unity underlying apparent dualities. Entropy, the second law of thermodynamics, states that entropy or disorder in an isolated system always increases. However, in the long term, systems seek equilibrium, representing a higher order. That is spiritual liberation, that is moksha. In Advaita Vedanta, spiritual liberation involves realizing the non-dual nature of the self, transcending the illusion of separateness and disorder to achieve unity and harmony. So we have a lot to discuss like this regarding the fire and thermodynamics, sound and creation. Likewise, this is actually a vast topic regarding the sound. Dhamaru, the drum in Nataraja's hand, represents the sound of creation. That is a primordial vibration. And talking about the cosmic vibrations in physics, sound and vibration represent energy and matter at fundamental levels. So this concept of primordial vibration aligns with the modern theories of cosmic origins, like the Big Bang or whatever we call it. So coming to a conclusion, the philosophies of Nataraja Thatwam and Advaita Thatwam offer profound insights that resonate with principles of thermodynamics and cosmic dynamics. The eternal dance of Nataraja embodies the cyclical process and dynamic balance of the universe, while Advaita's non-duality
aligns with the conservation and transformation of energy in thermodynamics. Why I am talking about physics is because dance is about all of this. It's not just the movement of your body. You need physics, you need chemistry, you need biology, you need maths, you need everything to be a dancer. So again, coming back to the sloka, the Ankikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarva Vangmayam Aharyam Chandra Tarati Tvam Namah Satvikam Shivam. This encapsulates profound philosophical and theological concepts within its brief but evocative lines. It actually serves as a concise yet comprehensive representation of a very vast subject, intertwining the essence of the divine with the universe and the performing. And this is something that I have always kept in my heart. This is by the great scholar Ananda Kumaraswamy. The essential significance of Shiva's dance is threefold. First, it is the image of his rhythmic play as the source of all movement within the cosmos, which is represented by the arch. Secondly, the purpose of his dance is to release the countless souls of men from the snare of illusion. Thirdly, the place of dance, Chidambaram, the center of the universe, is nowhere else but within your own heart. So with that, I would like to conclude my presentation, and I believe we would be having a Nritarchana now. Are you presenting it now, Aparnaji, or later? Yes, I'm going to present first, then we will take comments. Can I? Okay, sure. Yeah, your screen is, Yeah, can I stop it, sharing? Yes. So that was a wonderful presentation by Rachana ji, but before we take few comments and discuss further, let me have one performance by her, which she has shared with us, because I requested her that it is our pleasure that we have Kuchipudi dancer among us, and we must have some glimpse of it through her presentation. So before the presentation, sorry. Ji, please. Can I? Yeah. This is from the Nandanar Charitam, written by Gopala Krishna Bharati, where the Nandanar, the devotee of Shiva, he was actually not allowed to see Shiva because he was from a lower caste. And finally, he reaches the temple, the Thillai, and he visualizes the dance as he enters to the Thillai temple, the Chidambaram. So this is how he visualizes Shiva's dance, how he sees Shiva's dance. कनकसभै तिरुनडनं कनकसभै तिरुनडनं कनकसभै तिरुनडनं कनकसभै तिरुनडनं कनकसभै तिरुनडनं कण्डु कळित्तु आनन्दमடைந்தே कनकसभै तिरुनडनं கண்டு கழித்து ஆனந்தமடைந்தே கனகசபை திரு நடனம் சனகசனந்தன முனிவர்கள் பாட சதுர்முக தேவனும் தாளங்கள் போட சனகசனந்தன முனிவர்கள் பாட சதுர்முக தேவனும் தாளங்கள் போட தினமும் 1000 பேர்களும் கூட
കിട്ടത്തതിങ്ങിണതും ദിത്തോം തോം തകതോം തോം 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 ദിമിതോം തോം തകിട്ടത്തനിങ്ങിണതോം என்று கனகசபை திருநடனம் கண்டு களித்து ஆனந்தமடைந்த கனகசபை திருநடனம் நந்தி பிருங்கி சிவகணங்களும் கூட நாரதர் தும்புரு சங்கீதம் பாட நந்தி பிருங்கி சிவகணங்களும் கூட நாரதர் தும்புரு சங்கீதம் பாட பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட கோபால கிருஷ்ணன் மதளம் போட பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட கோபால கிருஷ்ணன் மதளம் போட கனகசபை திருநடனம் கனகசபை திருநடனம் கனகசபை திருநடனம் கனகசபை திருநடனம் கண்டு களித்து That was so good, so good. I mean, I must say that your postures and the expressions were so good. We are not neither a teacher nor a student of, we are just a basic audience. But we actually enjoyed a lot with your presentation and of course with your this performance also. That so well. Now, in fact, you said that with dance and especially to when we recognize and dance with Nataraja form, then we elevate to the level of Shiva. And actually with your performance and your talk, we actually got elevation, that kind of elevation. We can feel that. Thank you so much. And now this platform is open for the discussion. Anybody like to have some discussion or some comments for the learned scholar of this evening? Dr. Opatna, can I say something? Ji, please. Yes, first of all, I would like to congratulate Dr. Rachana. It's a very brilliant presentation, and I must congratulate you. You have taken so many aspects of the dance form. Actually, you have taken philosophical aspect, you have taken cultural, religious, spiritual, and lot many things.
So I just find something when we talk about the dance form of Shiva, Lord Shiva. Can we equate this dance form with Rita and Dharma? That is one question. Rita, universal law of order. Universal law of order. Am I audible? Actually, my mic is very, connection is very poor. So it's Rita and Dharma. That is one question. And second thing is that is the only system which I just found. That's my personal opinion, because it's a very pragmatic approach the Kashmir Saivism has taken. When you give a comparative analysis with Advaita study, though Advaita is also quite similar model. When Sankaracharya said that Brahma Satya Jagat Mithya Dive Brahmi Vanapar. So world is a falsity, but then Ma'am, very I'm sorry to interrupt. we cannot convince the audience. Ma'am, I'm sorry to interrupt. Your question was not clear for me. Ma'am, I request you if you can write in chat box, because of the voice cracking, we were not able to hear the main question. So, Dr. Matchway, sir, do you, because you have given 2 or 3 comments in the chat box, so maybe you want to say something or convey something. Dr. Upanna, am I audible? Yes. Can you hear me? Yes, Dr. Sahuji. Yeah, just one thing which I would like to request. I just would, when we compare with Advaita, so Advaita also it's a very rich Brahma Satya Jagat Mithya Jive Brahmeva Napar. So world is a falsity, and here you find in Saivism we have accepted this world as a reality, and we Ma'am, it is tough. Accepted the appearance part, which. Ma'am, not audible, not audible. The voice is cracking too much. I'll write on the chat box. Ji, please. Thank you. Ji, Matchway, sir. Okay, so any other comment from our? So what I understood from ma'am's question is like how Shiva's dance and the universal law of order connects. Is like we spoke about that, I believe. Yes, the creation, the destruction, the dynamic balance through the Nataraja Thatwam. And especially if we are talking about the universal law or the dharma, I believe Shiva's dance always embodies the concept of dharma, because it is the principle that governs the cosmos at large. And it ensures that everything functions in harmony. That is, for me, dharma is something that functions in harmony. Always I have seen that through Nataraja. Always I have seen that through the choreographies of Shiva. Always I've seen that through the musicals. I can't ignore the musical portion here. The compositions that the great composers, the Vagayakaras has given to us, it's so great, especially the upper Sundarar, all those saints, like as we have Tevaram. Tevaram is fully about the law and order.
when you go deep into that. So that's what we perform through dance as well. We are strictly like we are stuck with the music. Basically, we need music to express things. We dancers always need music to express our emotions. So this is what I have always felt. For me, dharma is something that functions in harmony. So I don't think no other deity has this much qualities to bring the dharma inside in us and spread it. Thank you so much. Ji. And we have among I have us. one question. Ji. Dr. Matchway, please. My question is how the soul connects to the cosmos through the dance. What is the process of connecting it? Sir, it's tough to explain because that is something I'm not telling. Like, I don't believe like moksha happens after death. Moksha happens, it's like Jivan Mukti. You are completely alive and you are getting that salvation. It's a feel that happens to you. So that's how I usually perform mostly in Shiva temples, and to resonate with the mukti, to connect the soul with Shiva, I just need an ambience. That's all I need. I have always felt that. With a lot of people watching me, and he being the witness of my dance, and me giving my expressions to the audience, and the tears happen in me and the audience together. I think that defines the soul connecting with Nataraja or Shiva. Thank you. Very correct. Thank you. That is correct. Actually, that is like that. Electricity gone here. Aparna, electricity gone here, but I wanted to ask a question. If you all... we have Anuja Sinha ji. She's though she's a journalist, but also a Bharatanatyam dancer. So she has learned Bharatanatyam. So I request if she'd like to comment something or have some feedback. Namaskaram. 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 I just wanted to ask that the dance of Nataraja indicates only, Nataraj dances for destruction or for creation also? Both. Not just that. So we have in the iconography, it's very clear that we have Srishti, Sthiti, Samhara, Hiro Bhava, the concealment, and the Anugraha. We have all the 5. Okay. Yeah, so Nataraja dances with Parvati. I mean, Tandav is for Shiva and Lasya, Shringar Nritya for Parvati. And both, when both dance, the creation of Srishti happens. Definitely. That's the ultimate. And when he dances with Kali, it's totally different. The bhava is totally different. So there happens the destruction and the concealment, actually. So Shiva becomes Rudra there. Yeah. So the Tandav dance indicates for creation also. I mean, it can create also. Yes, not scholars only have destroys. defined it as different types of Tandavas. So basically, we take Sandhya Tandava as creation. The one he does in the does at the Sandhya in Himalayas or in the cosmic, that is called as creation. Okay, thank you so much. Thank you. Pleasure. India is a rich tradition, is having rich tradition, so many dances, so many dance forms, and so many other kind of cultural practices and are here. So with this, we actually thank you, Rachana ji, for bringing out such a wonderful dance form for
for this platform for Ekādash Rudra-Manthan, and hopefully we will get back to you again in some of our any another program of our institute, because we do, as we do on Shiva, we do on Devi as well, on both the Navratras, on the Vasantik and the Sharadiya Navratras. So we may invite you. We are willing to invite you and may have your acceptance to that. So Would be my pleasure. thank you, Rachana ji. And now it's time to invite the another segment of our show. That is, I like to invite Mrs. Uma Maheshwari ji from Chennai to recite some Shiva shlokas for us on this platform. We welcome you, Uma ji. Mrs. Uma ji. Namas Sarvebhyaha. Can you hear me? Ji. She is a teacher, a Sanskrit teacher at Sanskrit Bharati, Chennai. Namas Sarvebhyaha. Shiva Shayankalaka. Shri Vidyalaya Ashtakam. Shri Rama Saumitri Jadayuvedam. Shadhanaditya Kucharchidaya. Shri Neelakantaya Dayamayaya. Shri Vidyanathaya Namah Shivaya. Mahadeva 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 Ganga Pravahentu Jatataraya Trilochanaya Smarakalahantre Samasta Devairavi Pujitaya Shri Vidyanathaya Namah Shivaya Mahadeva 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 Bhakta Priyaya Tripurantakaya Pinagine Tushtaharaya Nityam Pratyaksha Leelaya Manushya Loke Shri Vidyanathaya Namah Shivaya Mahadeva 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 Prabhuta Vatadi Samasta Roga Pranashakatre Munivanditaya Prapakaredvagni Vilochanaya Shri Vidyanathaya Namah Shivaya Mahadeva 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 Vakshotra Netrangi Vihina Jantoho Vakshotra Netrangi Mukapradaya Kushtadi Sarvon Nadaroka Hantre Shri Vidyanathaya Namah Shivaya Mahadeva 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 Vedanta Vedyaya Jaganmayaya Yogishwaratyaya Padambujaya Trimurti Rupaya Sahasranamne Shri Vidyanathaya Namah Shivaya Mahadeva 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 Swadita Mritpasna Prudanga Bhajam Vishasha Dukharti Bhayapahaya Atmaswarupaya Sharira Bhajam
Shri Vaidyanataya Namah Shivaya. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Srinilakantaya Vrishatvajaya Srkandavasyat Adishobidaya Suputra Dharadi Subhagyadaya Shri Vaidyanataya Namah Shivaya. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Shibalambikesha Vaidyesha Bhavaroga Hareti cha Jabennama Trayam Nityam Maharoga Nivaranam. Shibalambikesha Vaidyesha Bhavaroga Hareti cha Jabennama Trayam Nityam Maharoga Nivaranam. Shibalambikesha Vaidyesha Bhavaroga Hareti cha Jabennama Trayam Nityam Maharoga Nivaranam. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Mahadeva, 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 Mahadeva. Iti Sri Vaidyanath Ashtakam Sampurnam. Namah Sarvebhyah. Dhanyavadaha. Many thanks to Uma ji for this wonderful recitation and for reading this Shiv shlokas, and of course in the traditional way and the Sanskrit accent, and which is very very somehow you never if we are not in a culture in a Sanskrit group, we never got chance to hear such kind of shlokas, especially in Sanskrit. And this added a grace to our program. And also I like to inform everyone that her grandson is going to be our speaker on the last day of the event. And we are thankful to Shri Ashrut-ji for accepting our invitation. So glad to have both of the invited speakers of today. And now it's time to have the concluding remark. If we can have Professor Balram Singh ji's director comment on this occasion, if he is available. Ji, namaste, sir. I'm sorry. Namaste. What a great presentation. Both the recitation, dance, and this slide presentation was really beautiful. I've been wondering about this question about the universe and its origin and the method. Being a chemist, I could hear some thermodynamics and energy states that Dr. Rachana was talking about. And I wonder if, I'm just commenting right now and not necessarily asking a question. I wonder for her to think about is that the different kind of dance movements, are they represent different kind of phases of energy vibrations? And Yes, whether they get then constructive and destructive interference, and then the result is something very unique, which is the human being. But ultimately, we are really that energy that you're talking about, and Shiva and Parvati and place and movements and different kind of Jyotirlingas, all that is just a representation of that process embodied through Shiva, Parvati, and others. The 12 Jyotirlingas is just my wild guess. There are 12 cranial nerves in our brain. There are 12 cranial nerves, which kind of represent the head. You know how we talk, we listen, we taste, all the tanmatras represented, how we see. I wonder if those
Jyotirlingas represent that, because those really are the ones which make us awaken, enlightened. And that might be a process to understand. I just thought about that because somebody asked that question. Well, I don't know. I think, I'm not sure who asked that question. Somebody did. And I wonder if we could understand, or at least I can delve into trying to find out the features of these Jyotirlingas and the way they were produced, or the way they were created. That might give us some better sense. All this included, I think, is what we really try to make a purpose in this kind of efforts that Aparna, Anuja, Alok, and their team, and that includes Kuruom Jankalyan Sansthan, Kuruom Vidyalaya, the principal, Mrs. Afzal, and the president, Rajesh Kumar Singh, who happens to be my brother. And they all are making, and I'm so pleased to see these scholars who have deep interest, deep knowledge, and deep presentations to enlighten us. And we look forward to continue this process as we want to use these traditions which have deeper origins and meanings and subtleness to bring them out for the solving, or at least enlightening, or at least making people aware of how to use those symbols in today's world, when there are a lot of issues that are either in front of us or they are building up, and they will be coming shortly. So this, I mean, it's nothing happens without the energy or the will of these powers, but certainly we can use them to understand about our life and perhaps enlighten us and be in peaceful mode. So I think I want to appreciate the depth of understanding and discussion, especially the questions asked by Anuja as well as Aparna about, and also Dr. Jayanti Sahu, who are trying to get in deeper into it. Is exactly the purpose that we are trying to do. We want to get scholars from very high level to students at a level where they're really just the beginning in a primary schools, to get some glimpse of depth that exists in this universe, and something that our ancestors, who happen to be the ancestors, like there was some discussion about Manu, and where, interestingly, Manu and Satrupa, where Manu was a Dravidian king who really was moved in during that pralay to north. So it's also nice north and south, and the origin of the whole human cosmology and how humans became human. The word man comes from Manu, and so in that case, I think what we are trying to do at very small scale could be a very big center of expansion of these kind of knowledges in the future, and India hopefully leading that, so that we can serve the society and serve the humanity. Thank you, Aparna. Can I? Sorry. Sure, Yeah, Rachana ji. we just want to conclude. Thank you, sir. Thank you for that beautiful insight. Definitely, each and every dancer can work on that. For me personally, I have worked a little on this particular stream, like how I've tried to break down the 4 laws of thermodynamics and how is it applied to dance. So if I'm getting a chance in any other presentation, I'd love to present that actually, as we don't have much time to elaborate it. Actually, being a Kuchipudi dancer, we always have this understanding of our energy in a spiral movement way. So for each and every art form, it is different. So each and every scholar in that particular stream can work more on that. Sure, I think we will be happy. I teach a course. I taught this for, I think 15 years, called The Chemistry of the Mind.
And in the university for I think some network issue is there. Yeah. So we are exceeding our time by 25 minutes, and I must say that Ekādash Rudra-Manthan is now a platform where we are showing different cultures and traditions of India by way of service here, I think I'm back. Hopefully. Yes, but without picture. Okay. Okay. Well, so anyway, what I was saying to Rachana, Srishti, that we teach a course, and I'm finishing its book, and the major thrust of the course was thermodynamics. And believe it or not, my students have done projects on thermodynamics of democracy, thermodynamics of crime, all kind of things. So I think dance will be a good addition. So when I teach next time, I might, or even before that, I might talk to you and see if we can find a way to interconnect your dance inputs from thermodynamics point of view. Definitely. It would be my pleasure. I was thinking the same, that because sir always tell us about the theory of thermodynamics. Even in the case of Sanskrit, I am a Sanskrit student. So, and you are from dance background and you are using the same concept. So naturally, sir, like to have more on discussion on this. Surely we can have someday we can arrange some seminar or some discussion for this particular thing only. I'll connect with you on this. Very good. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rachana ji. And with this, we are here to conclude the session. And I was saying that Ekādash Rudra-Manthan is now a platform where we are showing certain few traditions of India or culture of India by way of few days ago, we were having bhajan in Awadhi and Bhojpuri language. And today we have a dance form from the Andhra Pradesh itself. And also the Shiv Shlokas recited by Uma ji is from the Chennai. She's with us. She was with us, and now and also many of the Shiv bhajans and recitation in the Sanskrit we already had, and again we are going. And lastly, in the last year we had a presentation on Bharatnatyam dance. Again, that relates with the part of the Nataraja only. So this is how we are exploring different kind of culture and other talks by way of talks and by the way of performances at this platform. So we are able to do this because you all are connected with us. So thank you for all the support. And I just want to say that one thing, that Aparna is not feeling well. She is unwell. She is in fever, and because she is so committed, and in that situation she is doing this program. So we must appreciate her, we must praise her dedication and her commitment. Thank you so much, Aparna. Thank you, Anujaji. Thank you. And so take care. Thank you, Anujaji. And we are concluding our session today with this Om Rudraya Namaha. Tomorrow we are again going to meet all of you again through Zoom platform and as well as on the Facebook at 6 p.m. India time with new speaker. From this time we are having Ms. Satyavani ji. She is from US, connecting from I think from California or San Diego. I'm not that sure. San Francisco, yes. Thank you. So she will be here with us. Thank you, Obi. Bye. Namaste. Namaste. Namaste.